So everybody, as we all know, we are gathered here for the 2-day workshop session. I must guess you guys must be new here, obviously. So I will give a brief introduction of this workshop. This workshop is organized in the major subjects of social sciences to give you an idea that what can be your possible career options after doing graduation, post-graduation and further degrees, be it a diploma or else. So this workshop, we are organizing this workshop in 6 major subjects of social sciences. We already had 4 sessions in which there was a lot of insights that were given. Now we will be moving towards economics. That is one of the major subjects that is being followed in DHU. You guys must be witnessing that. So I would like to start it with a quotation. The curious task of economics is to demonstrate the men how little they really know about what they imagine they can design. इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं हमारे पोटेंशियल को रियलाइज करवाता है कि हम जितना एज ए मैन एक प्रिमिटिव एरा में थे तो हम एक लेबर पे ज़्यादा फोकस रहा करते थे, तो वी रियलाइज इट विद इकोनॉमिक्स की कैसे हम उस चीज़ को कैपिटलाइज कर सकते हैं और कैसे उसके थ्रू हम ऑब्वियसली प्रोडक्शन और अदर एक्टिविटीज़ में भी, वो तो एक मटेरियल थिंग्स होगी, लेकिन अगर बात करें थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, तो इकोनॉमिक्स इज देयर टू टेल यू कि व्हाट इज योर पोटेंशियल एंड हाउ यू कैन एक्सप्लॉइट दैट. ऑब्वियसली उसके लिए आपको चाहिए होगा कि आप पहले एक कुशल अग्रसर बने, आप ऑब्वियसली आगे की तरफ बढ़ें, आपको गाइडेंस हो सी चीज़ की कि आप कैसे अपने पोटेंशियल को रियलाइज करेंगे, कैसे आप उसमें आगे बढ़ेंगे. तो इसी कड़ी में हमारे साथ है प्रोफेसर राकेश रमन सर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स. I would like to introduce sir to you all. Sir is a gold medalist and I am very proud to announce that sir is a SP Sinha medal holdest for his PhD that he conducted in economics. Apart from that, sir has taught in many universities and many states across India. He has also taught in Bhutan, so that is quite evident that he is the real right person to give you the guidance of the career options available to you. सर का स्पेशलाइजेशन जो है दैट इज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसके अलावा मेजर फील्ड ऑफ वर्क्स है दैट इज एग्रीकल्चर एंड इनफॉर्मल सेक्टर एंड एजुकेशन. तो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा और मैं इनवाइट करूँगा शिवांशु फ्रॉम द टेक्निकल टीम टू प्लीज फैसिलिटेट सर विद द सैपलिंग्स सो दैट वी कैन मूव अहेड. प्लीज शिवांशु. एवरीबडी प्लीज क्लैप फॉर सर. Thank you, sir, for being with us. Now I will invite sir to please come up on the stage and give us great insights into the subject. Thank you very much, and a very good afternoon to all of you. I must appreciate the organizers for taking this initiative and organizing this career planning workshop. One of the major problems that the modern youth face these days when they are still in the education thing is about their career, that fear, the apprehension about their career, what they are going to do after they finish their education, and whether they are going to get a job and what kind of job they are going to get after they finish their education. That is something that always keeps torturing and tormenting us. So any workshop on this is always going to be of help. We all know that the world is becoming increasingly difficult and competitive. And what is very contradictory in today's world is to know that we have coexistence of jobs as well as unemployed. As a student of economics, I can tell you about a theory which was given way back in 2010, and for that Peter Diamond and his associate got Nobel Prize in economics, and that is called search and matching theory of employment. The theory says that in any economy there exists sufficient job and there also exist people who are job seekers. But somehow, because of so many regions, the job seekers are not able to get the job, and if at all they get the job, there is a time lag. What actually happens is there is information asymmetry. We are not aware where the jobs are available, and it takes time for us to come to know that based on my ability, my competence and my field of specialization, there is a job available in Chennai, and if I go there and I apply for that job, I'm going to be very suitably rewarded. Similarly, the employer doesn't know that there is somebody or there are people living in Banaras who are very
apt, very appropriate for the kind of job, for the kind of work that he wants him or her to do. So because of this information mismatch, there is a time lag. Secondly, what actually happens is the students, while they are still studying, they are not aware the kind of opportunities that exist and the kind of training that they should go for in order to get the job of their choice. So you take up a course because your friend has taken up that course. I still recall some 30 years back when I had to make a choice. My friend said, I am going to study economics. So I said, oh, I'll also study economics. There was no career plan as such. There was no, future goal in mind. Since my friend with whom I had studied till class 10th or class 11th, since he was going for economics and even he was not sure why he was going for economics. Some elder had told him once that economics is a good subject, so he said, I'll take economics. So like a true friend, I'll say, I'll also take economics. So many of us, we take this decision, and whenever we are involved in the admission process, we find that students, when they apply for admission here in this university, I still recall a girl from my native place once came to us because she had to appear at the entrance test. So she was very excited, BHU बड़ी अच्छी university है, ये है वो है. Now you are all awestruck when you come to this university. इतनी बड़ी university, इतनी building, सब कुछ बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला होता है. So she was very excited. So I said, when is your examination? So she said, one is on 5th, or one is on 7th, one is on 9th, one is on 11th. I said, those days BHU used to conduct the test. So I said, how many tests are you going to appear at? Well, I am appearing at BA and in economics, BA in social science and arts, and then BCom, and then BA LLB. I said, you are appearing at anything and everything here. What career plan do you have? Her only career plan was to get admitted at BHU. For most of us, this kind of attractions are there. So it's not that genuinely unemployment exists. The real issue is we are not aware of the real demand for kind of jobs in the market, and this kind of workshop therefore is always going to be of help. Whenever you are actually taking admission at the undergraduate level, in fact, these days, guardians have become so particular that even a 4-year-old boy or 5-year-old girl is every day told by his or her mother कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर मेरी बिटिया डॉक्टर बनेगी. So you start brainwashing her or him at a very early stage, though it is not desirable. Remember what Rousseau said: "Man is born free, everywhere is in chains." So don't tie him or her in chains of your desire. You should let him or her find his or her field of interest. But what actually happens is most of us, especially those of us who are coming from Eastern UP and Bihar, we are not very particular about the kind of course that we should be choosing. We are not very career conscious, so to say. We do not understand ourselves. We do not understand our limitations. We do not understand our strength. At times, somebody else tells us कि तुम्हारा गणित तो बड़ा अच्छा है जी, तुमने कैसे बना दिया? बड़ा अच्छा डायग्राम बना दिया तुमने, तुम्हारा हैंड बड़ा अच्छे, फ्री ड्राइंग तुम इतना अच्छे से करते हो. I was studying in class 9th and then I had to draw a diagram and one of my cousin was sitting. So I drew a very straight line without using scale. बोले अरे तुम तो चित्रकारी क्यों नहीं करते हो? हमने कहा मुझे कम चित्रकारी आती है. बोले नहीं तुम्हारा इतना देखो स्टीडी हाथ है. If you want you can learn that. I never consciously knew that I could do that. So first is to understand yourself, set your career goals, revise, revisit your skill, and then search for the job. So you need to go for career planning. In fact, when you are at the undergraduate, at least, if not at the class 11th or 10th level, at least at the undergraduate level, because here you get good company, especially if you are coming to a university like BHU, you'll find that at least 10-20% of your classmates are very particular, very sincere, and they have a goal in mind and they pursue that. बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं इकोनॉमिक्स में अच्छा नहीं कर रहे हैं तो डांटते क्या करते हो, पढ़ते नहीं हो. बाद में उनके दोस्त से पता चलता है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं. राइट फ्रॉम BA फर्स्ट ईयर he is not so much after getting very high marks in economics or history or political science. He is so particular of getting good knowledge of general awareness, general knowledge, current affairs, numerical ability, all these things which are normally asked in competitive examination. So some of them are very particular. But 70-80% of them, they just flow along the tide. जैसे चल रहा है चल लेंगे. और once the BA is complete, then they have to say अब क्या किया जाएगा. तो एमए में हमारे पास बहुत से स्टूडेंट आते हैं जो इसलिए आते हैं कि उनको ये नहीं पता कि अब क्या किया जाए.
बीए खत्म हो गया है तो एमए में एडमिशन ले लेते हैं, मिल गया तो ठीक है, एमए कर रहे हैं। I asked once to my MA student, सर क्या कैरियर प्लानिंग है? सर बैंक की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा यार बैंक की तैयारी करने के लिए एमए की तो जरूरत नहीं है, तुम 2 साल एमए में क्यों बर्बाद करो? 2 साल या फेल करने के डर से पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि टीचर फेल कर देगा, तुम नहीं पढ़ोगे तो। इससे अच्छा तुम 2 साल सर कहीं टीचिंग में मिल जाए तो। मतलब you are going to a station, railway station, thinking that if train is not there, you might catch a bus, and you might even get an aircraft. You are going to a railway station, you will get a train or you will not get it. You cannot get either a train or a bus or an aircraft or a helicopter. So most of us are not very sure about it. So I am suggesting therefore that we need to do some career planning. This is something which is general, not specific for economics graduate. This is true for everyone. You need to understand your interest and passion. Many times we are not aware of that even. Many times our friends tell us about our passion, about our interest. If somebody asks you कि तुम्हें किसमें मजा आता है? अरे ऐसे enjoyment में, enjoyment is a very broad, vague term. Enjoyment किसमें आता है? हो सकता है कि ड्राइंग में आता हो सकता है क्रिकेट खेलने में आता हो सकता है कि पढ़ने में आता हो. So you are not aware of your affinities, you are not aware of your passion. If you are aware of your interest, affinity and passion, and if you follow that line, make your interest, your passion, your profession, you will be a Sachin Tendulkar. Nobody would have taught Sachin Tendulkar calculus, and he would have been a big failure there. अगर सचिन तेंदुलकर के पिताजी डंडा मार के कहते नहीं तुम्हें बैठ के अब इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है या जो भी करना है इंजीनियरिंग करना है तो कितना बड़ा डिजास्टर होता। आप सोचिए, विराट कोहली के मार्कशीट आज सुबह में देख रहा था मैं, कोई वायरल कर रहे हैं लोग, देखो गणित में कितना नंबर आया। Who knows what was his score in mathematics? He pursued his. किसी ने पूछा वो इंटरव्यू में कि कहाँ तक पढ़े, बोला मैं तो यहाँ भी नहीं पढ़ सका, कहाँ मौका मिला, क्रिकेट खेलता था, मजा भी आता था, बाद में थोड़े बहुत पैसे मिलने लगे, तो देखिए कितने पैसे मिलने लगे। So first thing is understanding your interest and passion. Second thing, trying to understand your personality trait, your attitude, what kind of person you are. Are you a leader or a follower? Leader and follower, they are going to have different kinds of job. Now, if I had to lead a team here in the university, I would rather not do it. And if I am made a leader, I will be a disaster. I am better off as a follower. If a committee is formed, I am now senior in age, so dean or vice chancellor might say, you will be the chairman. I said, sir, you make me a member, make me a junior person, chairperson, I will offer him or her all support. But I cannot be a leader. Maybe because that is, there is some problem with my personality. ठीक है, हर आदमी लीडर तो नहीं हो सकता है. सचिन तेंदुलकर was a big flop as a captain. इतना बड़ा खिलाड़ी है, उसने छोड़ दिया कि नहीं मुझसे कैप्टनसी नहीं होने वाली। रियलाइज तो करना होगा ना, और कैप्टन अगर वो बना रहता शायद उसको हटाते नहीं जल्दी, या जब हटाते तो बड़ी बदनामी हो चुकी होती। आप उसके अच्छे कारणों से नहीं जानते जाते हैं, बड़ा ही वाज अ बिग फ्लॉप एज अ कैप्टन, उसने इंडिया को 50 मैच हरवा दिया। राइट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड whether you are a leader or follower, whether you want to work alone or you want to work in a group. If you are a team person, you need different marketing का जॉब करो, बहुत सक्सेसफुल होगे अगर आप टीम पर्सन हो। और नहीं, if you want to work alone, be an artist. You can be a very successful artist. So you need to understand whether you want to cooperate or compete. What you are a thinker or a doer. There are people who are very good strategists, but if they are asked to do implement the strategy themselves, they may not be that successful. But sitting back in their room, they can give you a plan and you can work on it and you will be successful. So you need to understand that. Third, what is your level of education and proficiency? You need to understand your level of education and proficiency. Economics से बड़ा जॉब मिलता है, बहुत लोग कहते हैं मिलता होगा, लेकिन जब जॉब मिलने वाला समय आता है तो पूछते हैं आके यहाँ पे कैंपस वाले कि जी बताओ सॉफ्टवेयर कौन कौन से जानते हो, इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ी है, ये डेटा लेते हो, इसको जैसे हमको एक कर्व बना के दिखाओगे, प्रोजेक्शन कर सकते हो। सर मैथमेटिक्स तो नहीं आती, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है अगर मान लीजिए और जॉब आपका मिल रहा है वहाँ पे फोरकास्टिंग में, तो फिर इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद भी हम लेबर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं जान रहे हैं, तो यूजफुल तो नहीं होगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर लेवल ऑफ efficiency and level of education and proficiency.
Similarly, what is the nature of job? I still recall I was teaching earlier in Bihar, and I shifted to some other university. I came back during vacation. I met one of the students who had just completed his masters. I asked Vidyaji, what are you planning to do now? Sir, I will go for UPSC now. दिल्ली जा रहा हूँ सर, यूपीएससी की तैयारी कर। अब एज ए टीचर मुझे मालूम है आप नहीं कर सकते, मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत दिनों तक आपका इंटरेक्शन है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन आप बैठोगे ऐसे चुटकी बजाओगे और आप ही की तस्वीर निकलेगी कंपटीशन सक्सेसफुल नहीं निकलेगी। मैंने कहा पिताजी, व्हाई डोंट यू थिंक समथिंग एल्स, यू आर वेरी गुड एट दिस, बट एज अ टीचर यू कैन नॉट से दैट यू आर नॉट डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस टू क्रैक इट। तो मैंने उनको बहुत डिस्करेज किया, ये कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा है। बट ही वॉज कन्विंस्ड कि सर करना तो यूपीएससी करना, ठीक है चलेगा यूपीएससी कर। 5-6 साल बाद फिर मिले मुझे, मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप? सर घर में बड़ा ज़रूरत था तो सोचे कि यहाँ पर किराना का दुकान एक खोल लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि किराना का दुकान खोलना कोई गलत चीज़ है, लेकिन आपके एस्पिरेशंस कहाँ थे और आपने क्या अचीव किया? व्हाई? बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू जज हिज रियल एबिलिटी, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी. So many of us overestimate ourselves and some of us underestimate ourselves, both of which are going to be harmful. So you have to have correct estimation of your real capability. इतनी लंबी है, मैं छलांग लगा के उस पार जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो नीचे गिर जाऊंगा गड्ढे में, हाथ पैर टूट जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। Then what kind of job you want, whether what kind of experience, what kind of skill, all these things are, I cannot keep talking about this. All these things are very important, and in your career planning you have to take these into consideration. Now, as a graduate, when you start, you need to first explore choices. What are the choices before you? Getting job is the ultimate goal, but how to start? How to go about it? I'll say there are 5 alternatives before you. Maybe some of you or some of your earlier speakers might have told you about 7 or 8 or 9 or 10. I could get, because whenever you are classifying something, you have your own perspective of classifying it. So I feel that there are 5 important things from among which you can choose. Number 1, you can do some short-term skill development course. I'm doing graduation from BHU, and probably most of you might be knowing it by now that your course is not very demanding. So you have got a lot of free time. That is why most of the students who are found on the roads here in BHU campus, they are from Faculty of Science, Social Science and Faculty of Arts. Not from Faculty of Science, not from Faculty of Agriculture, because you have a lot of free time. Fine, so why not I utilize this free time for short-term skill development courses. You can do it and I'll talk about it. Then during vacation, what I'm planning to do? Well, I'll go back to Bihar, my native place. आम बहुत होता है, खा सकते हैं, पिछले 20 साल 22 साल से खा रहे हैं, एक साल और खाएंगे, और हो सकता है कि आपके इस व्यवहारों के कारण परमानेंटली वही रख के खाना पड़े। तो how to utilize your summer? Why don't you go for some internship? I'll talk about that. Third, prepare for competitive examination. Right from the first day when you come to join this university, you decide that I have to go for banking job, I have to go for civil services, I have to go for this kind of job, and you start preparing from there. Fourth, नहीं जी मुझे तो higher education के लिए जाना, I want to become a teacher, I want to become a professor, whatever. And fifth, मुझे अपना business शुरू करना है। ठीक है, बेसिक एजुकेशन तो जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ स्किल करूंगा डेवलप कि अपना बिजनेस कर पाऊँ। So these are the 5 alternative choices. If you look at the data for United Kingdom, you find 65.2% of their economics graduate, they go for direct employment. तो उनको ग्रेजुएशन करना है, जैसे ग्रेजुएशन करेंगे कहीं नौकरी खोजनी है, नौकरी ज्वाइन करेंगे। उसके बाद छोटा परसेंटेज है, 10.7% go for further study. 13% go for working and studying together, and that is because of their family culture, because their higher education is very expensive, and once you are say 15, 16, 18 years old, your father says कि अब जाओ भैया अपना गुजारा देखो, तो they are not able to afford higher education because parents are in number of cases not ready to pay these fees, so they go and work, and after they
earn some money, then again come back to the educational institution and they are doing part-time job and then studying. ऐसे भी बहुत बड़ा 13% है. उसके बाद छोटे पर्सन unemployed and others. If you look at the Indian condition, what is happening? A very high percentage of our economics graduate, they try to go for job. Whether they get a job or not, unfortunately, we do not have data for India. यूके के लिए डेवलप नेशंस के लिए डेटा है, हमारे पास डेटा नहीं है, लेकिन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देम गो फॉर जॉब. A higher percentage also go for higher studies, not because they want a teaching job, not because they know that after doing MA in economics they can write Indian Economic Service examination. They probably, many of them have never heard of Indian Economic Service and they are not knowing that MA in economics is must. So higher studies, what? Because why higher studies? Because they do not have anything else to do. तो क्या करते हैं, चलो तब तक MA. इसलिए इतनी भीड़ की जरूरत क्या है? मैं तो बार बार पूछता हूँ, क्यों 100 लोग पढ़ रहे हो यार? तुम्हें टीचर बनना नहीं है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस नहीं करना है, तुमने कहा बाकी कौन सी ऐसी नौकरी है जो बीए करने के बाद शुरू नहीं होती है? अगर बाकी की नौकरियां बीए करने के बाद शुरू होती हैं, जो 2 साल में या MA करने में लगाऊंगा, मैं वो नौकरी की तैयारी क्यों नहीं करूंगा? Fine, if I want to go for Indian Economic Service, for that I must do MA in economics, I should do MA in economics. If I want to go for a teaching job, a research job, fine, for that MA is important. Essential condition, I will go for that. If not, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो इकोनॉमिक्स MA करना क्या जरूरी है? वो 2 साल जाके उसकी तैयारी करो. So here higher percentage go for higher studies, and as far as you see unemployed, another significant proportion is unemployed. Working and studying is not very common in India. Now I have talked about these 5 aspects. I can talk about these one by one. वायरस को याद करें. Short term skill enhancement. क्या था वो? दोनों हाथ से लिखता था, स्किल था स्किल. तो यू नीड टू enhance your short term skills. You are doing economics graduate, maybe हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़, जो भी आपका सब्सिडियरी है, ठीक है, वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ कुछ और चीज़ भी अगर हम अपना रेपर्टोयर में जोड़ लें कि कल होकर कहे कि भाई और क्या जानते हो? बोले सर MS एक्सेल, आई एम मास्टर ऑफ MS एक्सेल, आप एक्सेल पे जो भी करवाना चाहिए मुझसे करवा लेंगे सर, कर दूँगा. सर मैं ये सॉफ्टवेयर जानता हूँ, मैं टाइपिंग जानता हूँ, समथिंग एक्स्ट्रा. So we talk about skill enhancement courses. What kind of skill enhancement courses could be there? I said first is obviously a skill that boosts you professionally, like computational skills related to computer and computation. Language skill, that is a major problem for most of us coming from Uttar Pradesh or Bihar. We think in Hindi, translate that in English and then speak. This is how we all speak English. Most of us who have not studied in convent school. I did not study in convent school, so I still recall कि अब से टीचर पढ़ा रहे हैं साइंस अंग्रेजी में, तो मुझे एक सवाल पूछना है, तो मैंने पहले हिंदी में सवाल सोचा, फिर उसको ट्रांसलेट किया, फिर चेक किया ग्रामर, गुरुजी ने बताया था 9th में आई के साथ हैव लगता है, तो फिर कंस्ट्रक्ट किया, क्योंकि मैं गलत नहीं बोलूँगा, कैसे बोलूँगा. Whenever you are using a second language, you will always use second language correctly. जब आप फर्स्ट लैंग्वेज यूज करते हैं, आप हिंदी जब बोलते हैं, ढेर सारी अशुद्धियाँ उस हिंदी में होती हैं, आप और हम ध्यान नहीं देते हैं. आप बाहरी लोग जब अंग्रेजी बोलते हैं, आप स्लैंग यूज कर रहा है, कहते हैं ना, स्लैंग यूज कर रहा है. वो मैं एक बार एक नॉवेल पढ़ रहा था, आपने भी पढ़ा होगा, एरिक उसका सेगल का लव स्टोरी. अब उसमें एक लिखा हुआ है कि जिमी दैट, GIMME दैट. अब मुझे जिमी दैट क्या हुआ यार, जिमी दैट क्या हुआ, डिक्शनरी खोला, कहीं जिमी दैट नहीं मिला. तो मेरे पिताजी की अंग्रेजी काफ़ी अच्छी थी, मैं उनसे गया पूछने के लिए जिमी दैट. अब उन्होंने पूछा कहाँ पढ़े, अब कैसे बोलूँ कि लव स्टोरी पढ़ रहा है. यू कैन अंडरस्टैंड, आज से 30 साल पहले, अभी तो बोल दोगे आप लोग, कैसे बोलो. मैंने कि नहीं, वो कहीं पे कोई नॉवेल था, उसमें लिखा हुआ था जिमी दैट. तो बोला अरे यार वो होगा गिव मी दैट, तो उसने जिमी दैट जो स्पोकन इंग्लिश के फॉर्म में लिख दिया है. फिर उन्होंने मुझे बताया कि कोलोकियल इंग्लिश क्या होती है और फॉर्मल इंग्लिश क्या होती है, और कैसे जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश यूज़ करते हैं, दे ऑल स्पीक फॉर्मल इंग्लिश, वी स्पीक वेरी फॉर्मल इंग्लिश. आप ग्रामेटिकली इनकरेक्ट इंग्लिश नहीं बोलते हैं, लेकिन जिनकी मदर टंग इंग्लिश की है, आपकी तरह की हिंदी, जैसे आप और मैं हिंदी बोलते हैं, हम तो गए थे, तो लाइक दैट दे ऑल्सो स्पीक इंग्लिश. तो प्रॉब्लम है लैंग्वेज की, प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल की. वन
You can go for a course on this. Subject area in upgradation. You are taught economics, but हमारे यहाँ है कि सर्वे बंधुना सर्वे संतु निरामया, ऐसा प्रश्न पूछे कि सब पास कर जाएं। जब ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि सब पास कर जाएं, तो प्रश्न इतने साधारण होंगे कि अगर थोड़े भी अच्छा है तो आपकी बुद्धि मेधा का कभी भी वो परीक्षण नहीं कर पाएंगे. You will never be tested because the objective of the teacher is to pass everyone. So he's not never going to ask very difficult question. That is why you are never going to be tested, and if you are not going to be tested, you are never prepared. तो बेहतर है कि हम क्यों नहीं अपने सब्जेक्ट एरिया अपग्रेडेशन का कोर्स करें. कोई बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बहुत सारा कोर्सेज ऐसे ऑफर हो रहा है जो कि बैंकिंग के ऊपर वो 6 महीने का कोर्स करा रहा है. आपको कितनी बैंकिंग पता है? कमर्शियल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, 2 डिफिनेशन जान जाएंगे. क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल. अब मैं आपको अप्लाइड बैंकिंग से 2 सवाल पूछूं, शायद हम लोग ही जानते हो. So, in-depth knowledge, applied exposure, inflation हर कोई पढ़ता है ना, आप लोग सब पढ़ते हो inflation, sustained increase in prices per. Okay, how is inflation calculated in India? बताओ. अरे मुकेश अंबानी कभी देश के तीसरे नंबर के सबसे पैसे वाले हो गए, कभी चौथे नंबर के पैसे. तो क्या क्या रोज उनका बैंक अकाउंट घटता बढ़ता रहता है क्या? नहीं तो कैसे सबसे एकाएक पता चला कि जनवरी में वो तीसरे नंबर पे थे और फरवरी में चौथे नंबर पे आ गए, फिर मार्च में दूसरे नंबर पे चले गए. हाउ डज इट हैपन? व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन? हमने सर पढ़ा है कि 2 मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट में आईपीओ लाया जाता है, एफपीओ लाया जाता है. अप्लाइड आई डोंट नो. So you need to understand that applied knowledge, because when employer is going to come, employer is never going to ask you define inflation. Employer is going to ask you, you have studied economics. Now how do you calculate growth rate? ये data है, इसका growth rate बेटा निकाल के दिखाओ. तो पढ़े हो ना GDP का growth rate, इसी पर हम लोग मारामारी करते रहते हैं. तो तुम जानते होगे. तो इसका growth rate निकालो. Nominal कैसे निकलेगा, real कैसे निकलेगा, निकाल के दिखाओ. Unfortunately we don't know. You can go for courses that can upgrade your subject area. You can go for courses that can monetize your hobbies. है ना? पेंटिंग बनाते हैं, अब आप कहें उसको आप और उसमें कुछ कोर्सेज डेवलप कर लीजिए, अपने स्किल को डेवलप कर लीजिए. पुट इट ऑन फेसबुक कि आपको अगर नेम प्लेट लिखवाना है, मैं लिख सकता हूँ. आपको बहुत ही आप 10 तरह के डिजाइन डाल दीजिए उसके ऊपर. आपको पेंटिंग में बड़ा इंटरेस्ट है, पेंटिंग BHU की पेंटिंग फॉरेनर्स खरीदते हैं, आते हैं मंदिर की. You can put it on the website. You can monetize it. Flexibility. When you are going for this kind of skill development courses, that provides flexibility in your career. ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा हूँ, लेकिन साथ साथ एक्चुअरियल साइंसेस भी थोड़ा पढ़ लिया हूँ. तो अगर कोई बीमा कंपनी वाली भी आएगी तो मुझे ये भी है और मैं भी हूँ. इसने एक्चुअरियल किया है, मैंने नहीं किया है. दोनों बाकी मामले में बराबर हैं, तो कंपनी किसको लेना चाहेगी? इनको लेना चाहेगी. तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी आपके कैरियर में, फ्लेक्सिबिलिटी होगी. यू कैन चेंज pathways very easily. Networking. When you go for any short-run courses, so many people who are doing online, and you get connected with these people. And then as you get connected, you get information so quickly. Remember, initially I said, jobs are there, but information about the jobs are not so easily available. When you develop network, that becomes possible. So one is doing short-run courses. Economics वाले क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा subject proficiency, that is very important. You should know your subject. Second, numeracy, numerical ability. Numerical ability means try to develop your quantitative ability. Try to develop your mathematical ability. Try to develop your ability to handle data. आजकल तो डेटा एनालिटिक्स चल रहा है, और आप इकोनॉमिक्स वाले हैं, आपको हम कहेंगे डेटा ये है, इस डेटा से मुझे ग्राफ बना के दिखाओ. पाई डायग्राम बना सकते हो? ये एक्सेल शीट पर डेटा दे रहा हूँ, पाई डायग्राम बना सकते हो? बना सकते हो, अच्छी बात है. बहुत नहीं बना पाए, और भी ये कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हो. सो न्यूमेरिकल एबिलिटी. देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल. यू नीड टू डेवलप दीज योर एनालिटिकल स्किल. आपसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हम पूछते हैं, हम क्या क्वेश्चन सेट करते हैं? हमारे वालों को मत करिएगा, नाराज होने वाले मित्र. आपका एक सिलेबस होता है, उसके पहले हम 4 या 5 शब्दों का बड़े धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं. डिस्कस, डिस्क्राइब, क्रिटिकली एग्जामिन, एक्सप्लेन. जैसे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिशेरियन क्वांटिटी थ्योरी. डिस्कस फिशेरियन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी.
खत्म, आपने रट के आए हैं, वहां पे उगल देना। If I ask you a question, how does Fisherian quantity theory of money differ with that of the neoclassical? And assuming that there is unemployment in the economy, or there is no full employment in the economy, how the conclusion of Fisherian theory will get affected? ऑफिसर ने जो थ्योरी दी है वो कह रहा है देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट, तभी एमवी इज इक्वल टू पीटी, पी इज इक्वल टू एमवी/टी निकाल के बता दिया उसने। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो कैसे चेंज होगा? इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? दिमाग। कोई रेडीमेड आंसर नहीं होगा, एंड दैट विल डेवलप योर एनालिटिकल स्किल। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट डू इट। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टीचर। आपको हम रटने वाली मशीन बना देंगे तो क्या फायदा है? जिंदगी के की जो वास्तविक समस्याएं हैं वो रटी रटाई लाइन पे नहीं चलती हैं। जिंदगी की जो समस्याएं हैं वो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं। तो यू नीड टू डेवलप दैट एनालिटिकल स्किल। सिमिलरली स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जानना पड़ेगा, एंड कम्युनिकेशन इज स्किल इज मस्ट नो मैटर which subject you are studying. So these skill you need to develop. कैसे करेंगे इसको? हमने कहा बहुत इंफॉर्मेशन है वेबसाइट पे। नेटफ्लिक्स के अलावा भी बहुत सी चीजें देखिए आप। I'm just giving you few names: Coursera, Ed2Go, Google Skillshop, Udemy, Masterclass. ये सब कुछ just examples हैं. This is not an exhaustive list. Just an introduction. Just go there and they will tell you about a large number of short-run courses that are being run. 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, 2 हफ्ते का कोर्स वो रन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं, उस फी को दीजिए, you can attend the course and you can develop the skill. Question is, सर इतना ज़्यादा है तो क्या करें क्या ना करें? मैंने कहा ये कुछ मैंने कहा कि ये कुछ क्राइटेरिया मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इसको ध्यान में दीजिए। What is the objective of the course and course content? And does the objective match with your career plan? हाँ, मैं भी यही बनना चाहता हूँ, उस कोर्स का ऑब्जेक्टिव भी वही है, मेरे लिए बेस्ट कोर्स है। What is the time duration? टाइम ड्यूरेशन कहता है कि 1 हफ्ते में कम से कम 12 घंटे आपको ऑनलाइन देना होगा। आई कैन नॉट, 15 दिन का कोर्स है और ये अब नवंबर महीना चल रहा है, दिसंबर में एग्जामिनेशन है, अभी तो नहीं कर सकता, मैं करूँगा अभी तो इस एग्जामिनेशन के बाद करूँगा। So these are certain criteria, certain bases जिसके आधार पे आप कोर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे फी स्ट्रक्चर क्या है? बड़ा अच्छा कोर्स है, बस 75,000 लगेगा। अरे भाई 75,000 के आगे बस तो मत लगाओ कम से कम भारत में है ना? तो फी स्ट्रक्चर नहीं, हम इससे तो नहीं होने वाला, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, माय गार्जियन कैन नॉट अफोर्ड दैट। मान रहा 2,000 रुपये तो कर सकते हैं, कुछ पैसे तो जेब खर्च से ही बच जाते हैं, हो सकता है। मोड ऑफ टीचिंग, how they are teaching, they are say आप कह रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाते हैं और हमारे पास तो लैपटॉप ही नहीं है, मेरे पास तो एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है, not accessible to me, but if I have I can. So yes, these are some criteria. Affiliating university, most of these will give you a degree, a certificate, and these degrees they are not entitled to give you degree, they are linked with some other university. Coursera पे आप जाएंगे, हर कोर्स के पीछे बताता है कि ये जो कोर्स की जो डिग्री है ये आपको हार्वर्ड से मिलेगी, ये कोर्स की डिग्री आपको डीयू से मिलेगी। तो यूनिवर्सिटी का ब्रांड नेम भी तो इंपॉर्टेंट है कि भाई हमने कोर्सेरा से किया और डिग्री कौन सी है, तो डिग्री XYZ यूनिवर्सिटी है, नोबडी नोज दैट यूनिवर्सिटी। सो वेयर आई एम गोइंग टू सेल दैट सर्टिफिकेट? इफ आई शो दैट सर्टिफिकेट टू माय एम्प्लॉयर के कहां से ले, अच्छा ऑक्सफोर्ड में सर्टिफाई किया है, ऑनलाइन किया है, तब भी ऑक्सफोर्ड से किया होगा तो उनका क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म है, ठीक, मतलब वही बच्चे ने इस कोर्स को पास किया होगा जिसमें नॉलेज होगा। सो these are some of the criteria based on which you can choose course. So one alternative before you is to go for short run course. ये मैंने आपको जो शुरू में बताया था, यहाँ पे आप ध्यान दें, ये पांच एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो टाइम है उसे मुझे खत्म करना है। In between, if you have any issue, you can always interact. Second, I said doing internship. देखिए बस्ता लगा के आएंगे, अगर बैग देखिए निकल रहा है ब्रीफकेस लेके, internship. Now, what is internship? While you are still doing a course, you can go for some sort of short-run training with professional organizations, with government organizations. So during summers, you are free for 2 months. In most universities, we have a summer of 1.5 months to 2 months.
So you, during this period, 1.5 period, months period, you can get yourself linked with any government organization which is providing you the internship facility. You will go there, they will give you some work to do. So for example, if you go to Niti Aayog as an intern, Niti Aayog is developing a policy paper and it will put you in a team which is busy in developing that policy paper. And suppose he is the leader, now he will give you some work. ये करके लाओ, सर नहीं हो रहा है, देखो इसको ऐसे करो, ऐसे करो. So you, what you are doing? You are getting the experience, work experience, while you are still student. जो 1.5 महीने आम खाते, वो आम की जगह पे वहाँ पे कुछ और आप मजा ले और 1.5 महीने में इंटर्नशिप करें. बहुत फायदा है, बहुत फायदा है. मतलब है, you will get some income. Most of the cases, the internship is paid internship. They will pay you anything between 8,000 to 20,000 for economics graduate. If you are an engineering graduate, it can go up to 50,000, 1 lakh per month. But even for undergraduate, they will offer you anything between 8,000 to 20,000, depending on which agency you are getting, which private organization you are getting. That is one income. That income is secondary. 1.5 महीना कमा के क्या करना? Second, which is more important, is work experience. Now I have done some data analytic work while working with the Niti Aayog or while working with say Ministry of Higher Education. तो मुझे उसने कराया है काम. अब मैं जब एम्प्लॉयमेंट के लिए जाऊंगा तो पूछेगा कुछ काम किया है कभी, तो मैं हाँ सर वो मैं नीति आयोग में था 1.5 महीने, ये जो सर ये वाला जो रिपोर्ट है, आई वॉज इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग दिस रिपोर्ट, ये एनालिसिस मेरी की हुई है. दैट विल गिव यू confidence. Third is networking and liaison. You go to Niti Aayog, stay there for 45 days. Other interns are also there. You develop a rapport. The boss there, in whose team you are working, now you develop a rapport with him. Tomorrow, when you complete your graduation, you write a mail to that boss. Sir, I have just completed my graduation. I am free now. Not sure what to do. So can you suggest me something? Say, why don't you come to Niti Aayog? We have got a project. You can work in this project for 6 months, and then you can decide based on your experience. So that networking is possible through internship. It adds to your resume. सबसे बड़ा difficult resume तैयार करना. लिखें क्या? सबने 10th किया हुआ है, सबने 12th किया है, सबने graduation किया है, और आपने लिख दिया कि हमने गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, कबड्डी प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की. ये सब तो हम लिख ही देते हैं. बट इफ योर रिज्यूमे हैज दिस दैट यू वेर एन इंटर्न विद Procter and Gamble, you were an intern with PwC, that adds to your resume. That makes it more attractive. So it can turn into a job offer. In many cases it happens, especially they call it PPO in BTech, pre-placement offer. So you go for intern, you work there for 1.5 to 2 months, and they are very impressed by your commitment, your sincerity, your knowledge. So they say that, what do you plan to do after your graduation? I am not sure. Why don't you come and join us? So you get a job because of internship. So these are benefits. Now how to find it? Use campus resources. Your university's placement cell will tell you about internship. In our department, Department of Economics, we have a placement cell that informs the student about different internship opportunity. Normally, they are working with the postgraduate student because that link or liaison with UG student is missing. But then we can develop that link and liaison, and you can get internship opportunity from there. Then we have a number of sources available online. उनके वेबसाइट को जाके देखिए, मैं 2 मिनट में दिखाता हूँ, ये दिखा देता हूँ आपको. अब देखिए, आप जाइए नीति आयोग के वेबसाइट, मैंने जैसे एड्रेस दिया है, देखिए, आई एम नॉट गिविंग यू एड्रेस ऑफ नीति आयोग, इट इज www.niti.government.in/internship. There they are mentioning the internship opportunity and when it is going to be available, what are the essential qualifications for the prospective intern they are giving. Similarly, you have a number of international agencies. I've just given you, remember this is not an exhaustive list, this is only a suggestive list. Exhaustive तो 10 स्लाइड ही दिखाते रहो कहाँ मिलेगा. मेरा काम वो नहीं है, मेरा काम आपको बताना है कि यहाँ हो सकता है. देखिए, आप वर्ल्ड बैंक के साइट पे जाके देखिए, IMF के साइट पे जाके देखिए, आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, मैंने जितना यहाँ छोटा सा स्पेस था उसमें जितना अट सका मैंने 5-6 मिनिस्ट्री का नाम दे दिया. सब मिनिस्ट्रीज इंटर्नशिप ऑफर करती है. ऑल ऑफ देम आर ऑफरिंग इंटर्नशिप.
Then not only that, we have a number of other government, EPR, NCER, ये सब, ये RBI की internship है. They are all offering internship opportunity for the students. Some of these internship might be available for PG student, but some are available also for the UG student. These are government organizations. You need to keep visiting their website. If you do not have a placement cell in your faculty or in your department, you can do it on your own. Visit the website of these organizations regularly, and then you will find that they are advertising the internship opportunity. Normally, since you go during summer vacation, so after October and November, the advertisement comes. So that you can send form, January, February, they go for some kind of screening, and then by February end or March, you are informed that yes, you have been selected. This time period you have to visit this. तो ये दूसरा तरीका हो सकता है. एक तो मैंने कहा आपको कि आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या होगी. वन इज गोइंग फॉर स्किल डेवलपमेंट कोर्स एंड सेकंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी. इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस का कुछ का मैंने आपको नाम दे दिया है. ये ऑर्गेनाइजेशंस फॉरगेट अबाउट, मैंने पहला जो ये स्लाइड थी आपकी, ये मैंने डायरेक्ट जो इंटर्नशिप देता है उसका डिटेल है. एंड दीज आर एजेंसीज विच हेल्प यू इन गेटिंग इंटर्नशिप. They do not provide internship. They will act as a consultant. They will link you with the companies or with government agencies which are providing internship opportunity. So you have so many Internsala, LinkedIn का branch है, Monster कराता है, Naukri.com कराता है, Indeed. These are all some of the agencies that I have mentioned. You can visit their website and you find that they will provide you information about the internship opportunity. How to decide? Know the company. अच्छी कंपनी है, इसमें इंटर्नशिप मिल जाए तो बड़ा मजा है. ब्रांड नेम है, PwC का एक ब्रांड नेम है, डेलॉयट का एक ब्रांड नेम है. डेलॉयट में इंटर्नशिप मिल जाएगी तो भाई मेरा बायोडाटा, मेरा रिज्यूमे बड़ा इंप्रेसिव हो जाएगा. और कोई छोटी सी कंपनी है, बहुत से बच्चे हमारे इंटर्नशिप कहाँ कर लेते, नहीं कुछ तो भदोही में कर लिया, नहीं कुछ तो चंदौली में कर लिया. कहाँ एक छोटी सी कंपनी, आपने दिखा दिया कि हमने एक इंटर्नशिप कर लिया. डेफिनेटली वहाँ पे आपको वर्क एक्सपोजर क्या मिलेगा. उनके पास बहुत तरह का काम नहीं है, आपको वो क्या सिखाएंगे, क्या काम आपसे कराएंगे, और काम नहीं कराएंगे तो आपको क्या सिखाएंगे. सो ऑलवेज गो फॉर गुड कंपनीज. देन सी द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव इंटर्न बिफोर. RBI में करेंगे, जब करने का समय आया तो देखा कि क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है मस्ट बी स्टडिंग इन PG. हम तो UG भी नहीं पास किया, तो वो देख लीजिए आपका क्या इंफॉर्मेशन चाहिए. इंश्योर इट फिट्स योर कैरियर गोल. मुझे बैंकर बनना है और मैं जो इंटर्नशिप कर रहा हूँ हेल्थ सेक्टर में. एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का और जो हेल्थ मिनिस्ट्री का, मुझे वही मिल गया. भाई क्यों कर रहे हो भाई, जो उस लड़की के बारे में मैं कह रहा था. मैंने सोशल साइंस में भी फॉर्म भर दिया है, कॉमर्स में भी भर दिया है, लॉ में भी भर दिया. अरे करना क्या है यार, जो करना है वहाँ जाओ ना. इफ यू वांट टू गो फॉर जॉब इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, फाइन, go for internship in hospitals. That will add to your resume and that will improve your placement probability when you actually go for placement. So choose it that way. Match the timing and duration. That is another issue. Many times in our department we get request कि सर वो करा रहे हैं अगस्त से अक्टूबर तक. अगस्त से अक्टूबर हम आपको छोड़ ही नहीं सकते. हमारा तो मेरा सेशन चलता है भाई. हम मई जून में अगर आप जाएंगे, ठीक है, हमारे यूनिवर्सिटी खुल रही है 5 जुलाई को, आप कहते हैं 15 जुलाई तक लौटेंगे. वी कैन एडजस्ट दैट. बट यू से दैट द कंपनी इज गिविंग यू इंटर्नशिप फ्रॉम सितंबर टू नवंबर और हम लोग आपका दिसंबर में एग्जाम देंगे. तो कब आप इंटर्नशिप करेंगे, कब आप क्लास करेंगे, कब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे, नहीं सूटेबल है. तो दीज आर सो मेनी थिंग्स आर सेइंग, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है. थर्ड अपॉर्चुनिटी इज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. नहीं भैया मुझे इंटर्नशिप नहीं करना, स्किल डेवलपमेंट नहीं करना, मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए. बिकॉज एनी जॉब, एनी गुड जॉब, इफ आई वांट, आई हैव टू बी अ ग्रेजुएट. व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यू वांट? I have seen my friends, some of my friends when I was a student, they are preparing for bank and they are also preparing for civil services. Since I never wanted to go in bank or civil services, poor me, I wanted to become a teacher. एक गरीब शिक्षक था, तो मैं शिक्षक बनना चाह रहा था, तो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड. बट आई आस्क, यार तुम बताओ कि बैंक PO वाला तो वो एग्जामिनेशन लेता है, वो न्यूमेरिकल एबिलिटी और सब, और जब तुम पब्लिक सर्विसेज कमीशन को कर रहे हो तो वहाँ तो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ टेस्ट होता है, 2-3 पेपर चुनने होंगे, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, दोनों तो अलग अलग डायरेक्शन का. हाउ कैन यू प्रिपेयर?
तो देखो हमेशा ऑप्शन रहना चाहिए। अरे यार ऑप्शन क्या मतलब ऑप्शन रहने का? अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ पब्लिक प्रोफेशनल ऑफिसर का बैंक का, तो जिस प्रकार का एग्जामिनेशन मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो एग्जामिनेशन है दैट कुड बी एन ऑप्शन। Suppose I am preparing for UPSC, then I can definitely go for Uttar Pradesh Public Service Commission, I can go for Bihar Public Service Commission, I can go for Odisha Public Service Commission, because the nature of test is going to be the same. But how can you have or prepare for Bank PO and Public Service Commission? Because the nature of tests are going to be completely different. So you need to understand what kind of tests are there. Only MCQ, MCQ with interview, MCQ descriptive and interview, UPSC, MCQ prelims, descriptive, mains and interview. So the skill sets which are required are completely different. In some cases only MCQ is required, no interview. In some cases MCQ and this interview is there. So you need to understand what kind of examination you are preparing for. If you want to go for job, कौन से job में जुड़ जाएंगे? ये पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी ध्यान दीजिए रास्ता लंबा है, क्योंकि एक पब्लिक सर्विस कमीशन का साल में एक एग्जामिनेशन होगा, उस बार आपका नहीं हुआ तो अगले एक साल तक आप वेट करेंगे। लेकिन अगर मैं कॉर्पोरेट में जाता हूँ तो ढेर सारी कंपनियां हैं एंड एक साल में मुझे 500 चांसेस मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं जाना चाहिए, नहीं, मेरा यही टारगेट है एंड आई एम श्योर 3 साल मैंने सर बिताए हैं, 3 साल में मेरा आज का जो लेवल है बाकी बहुत लोगों से बहुत अच्छा है। बिकॉज लास्ट 3 years आई हैव नॉट स्टडीड ओनली इकोनॉमिक्स, आई हैव स्टडीड जनरल अवेयरनेस, आई हैव स्टडीड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सो आई एम वेरी प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। So you need to understand what kind of competition you are going to appear for, whether you have the skill set for that or not, and don't choose those combination of those competitive examination which require different skill sets. एक तरह के skill set में तलवारबाजी है तो चलेगा, तलवारबाजी के साथ साथ भाला वाला चलाना चल जाएगा, चलो वो भी फेंकते हैं जब चल जाएगा। लेकिन सर या तो मैं सोच रहा हूँ कि तलवारबाजी सीख लूँ और नहीं तो खाना बनाना, कहाँ से दोनों में स्किल बिल्कुल अलग अलग है। खाना बनाना सीखोगे तो तलवार नहीं चलाओगे, घर में चलता है लेकिन नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। घर में अगर आपने आई एम मैरिड मैन एंड आई नो, अगर आपने गलती से अगर नमक ज्यादा पड़ गया और आपने कह दिया तो खाना बनाने वाले शी विल बिकम अ स्पोर्ट्स पर्सन, शी विल नॉट बी वेरी एक्ट इन दैट। खाना बनाने में उनकी कुशलता प्रवीणता ज्यादा होगी, इसलिए हमारी गर्दन बच जाती है जब वो तलवार चलाती है। लेकिन कोई कंपटीशन नहीं है, कैसे करोगे यार? सो यू हैव टू चूज दैट। कहाँ से जाने? इतने सारे अपॉर्चुनिटी हैं, सारे वेबसाइट आपको, ऑल दीज वेबसाइट टेल यू अबाउट डिफरेंट जॉब्स, व्हाट आर द जॉब्स व्हिच आर अवेलेबल। विजिट करो, वो बताते रहेगा ये नौकरी आने वाली है, वो नौकरी आने वाली है, इसका यहाँ होने वाला है, उसका डेट आने वाला है। ये सब आपको कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, कोर्सेज बेच रहे हैं, बट खरीदिए मत। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दे के आपको लालच में ला रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन का तो फायदा आप उठा ही सकते हैं ना। जब जाइए विजिट कीजिए, अच्छा इससे अच्छा ये वाला है, इसको क्लिक करिए। हाउ टू डू इट? डेफिनेटली आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यू विल बी हैविंग एक्सपर्ट, बट you need to start early, because competitive examination you have lot of competition and it's so very difficult. So after graduation if you decide कि हम competition में, पहले तो सोच रहे थे कि सर सचिन तेंदुलकर वाले रास्ते में चलते, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप सोच रहे हैं कि अब आईएएस ही बन जाएगा। तो उठे एक दिन सुबह कि अब आईएएस बन ही जाना है। अरे यार तुमसे पहले वो 11वीं से ही लगा हुआ है आईएएस बनते, तुमसे थोड़ा कमजोर भी होगा तो तुमसे बहुत आगे रेस में निकल चुका है। And you will have to face, I'm not discouraging that person, but you will have to face competition from all these people. And what will happen after 2, 3, 4 years, people will start asking you difficult questions. और हमें इसमें बड़ी मजा आता है हमें, क्या भाई क्या चल रहा है आजकल? He knows that you are not employed. He knows that you are still preparing. He should not be asking that question. Because the moment you get a job, he will be the first person or second person or third person whom you will go and inform कि चाचा जी हो गया, मामा जी हो गया, भैया हो गया। नहीं इन्फॉर्मेशन आया मतलब नहीं हुआ ना, तो क्या पूछना जरूरी? अब किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया मेरे श्रीमती, पूछिए ना क्या हुआ, पूछिए नहीं। अरे क्यों पूछेंगे यार? अगर पूछेंगे उसका नहीं हुआ होगा, हाउ एम्बैरेसिंग इट विल बी फॉर हिम टू रिप्लाई
कि नहीं चाचा जी नहीं हुआ, नहीं अंकल नहीं हुआ। हमने कहा अगर उसका सिलेक्शन होगा तो अपने आप करेगा कि मेरा हो गया, जो आप बधाई देना है देते रहिए, बट डोंट आस्क embarrassing question. But we feel pleasure in asking embarrassing question. आपको दर्द देके मुझे बड़ा खुशी मिलता है, क्योंकि मैं अपना दर्द खुद से कम नहीं कर सकता, तो आपका दर्द बढ़ा के खुद का दर्द कम कर लेते हो। यही सोसाइटी। एक बार मैं कहीं जा रहा था, तो मैं और हमारे हेड साहब पतंजलि जी, क्या मैं उड़ीसा में हम लोग जा रहे थे, तो हम लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा रहे थे, तो उसने कहा कह रहा जानते हो बड़ा टेंशन है। तो मैंने कहा टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो एक व्यक्ति बगल में खड़े थे, वो भी पेट्रोल ले रहे थे, बोले भाई साहब आपका ये एटीट्यूड गलत है। हमने कहा क्या सर? आप कह रहे हैं टेंशन देने का, ये ऐसे करेंगे तो कैसे दुनिया चलेगी? हमने कहा नहीं, टेंशन देने का तरीका होता है सर। आज के जमाने में आप खुश रहिए, पड़ोसी टेंशन कुछ आ गया जरूर कुछ, अब वो टेंशन में पता लगा अरे वो रमन जी को कुछ मिल गया क्या, कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ हो गए क्या, और 7 दिन तक लगा रहेगा पता, जब तक उसको पता चल जाए कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। तो हमने कहा दिस इज द पॉजिटिव वे ऑफ गिविंग टेंशन। आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम फॉर हिम, आई एम जस्ट बीइंग हैप्पी, सो ही विल बी टेंशन कि क्या हो गया ऐसे। तो आप अर्ली स्टार्ट करें, रीड एंड अंडरस्टैंड अबाउट एग्जामिनेशन, व्हाट एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू अपीयर इन, what kind of questions are going to be asked, how frequently that examination is going to be conducted. So that major problem why you do not get good teachers, competent teacher. What is the main reason? First, the pathway is very long. After your MA, you have to go for PhD, 3, 4, 5 years for PhD, and then like UPSC, there is every year there is going to be no advertisement. अब BHU की वैकेंसी 2017 में अपॉइंटमेंट हुई थी, अगला अपॉइंटमेंट 2023 में हो रहा है। तो अगर किसने 18 में पीएचडी कर ली होगी, 19 में कर ली होगी, 20 में, 21 में, 22 में कर ली होगी, तो वेट करेगा। तो ये सब समझना होगा कि भाई, और पोस्ट आती कितनी है? 2 पोस्ट, 3 पोस्ट। अब भारतीयों की ईमानदारी के बारे में कहने की कोई आवश्यकता आपको तो होती है नहीं, आप सब खुद ही ईमानदार हैं। तो वो 3 पोस्ट है, वो 3 पोस्ट का बंटवारा कैसे होगा? ऑल दीज डायनामिक्स आर देयर। मैं कहता हूँ बच्चों को यार सुनो, सेकेंड फेज में यूनिवर्सिटी में आने की कोशिश करो, फर्स्ट फेज में गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाओ। क्यों? हमने कहा 20 पोस्ट निकलता है, बेईमानी 5 होगा तब भी 15 है ना, 15 में निकाल लेना, लेकिन 2 ही पोस्ट है। अब दोनों बंटवारा हो गया तो तुम तो गए, फिर तो अगले 7 साल बाद वैकेंसी आएगी। So don't choose that area where the competition is so much and where the frequency of examination is then you go for exploring the syllabus, which subject you have to choose, managing your time, and then in this OK 4R system they suggest overview, reading, recalling, reflecting and reviewing. These are the basic principles of competing preparing for competitive examination. Then do mock test, very helpful. और आजकल तो गुरुजी हम लोग वैसे में आते हैं, हमारी ईमानदारी स्थापित है। तो आप क्या, एक लड़का हमारे यहाँ, 2 लड़के थे, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया वो लेक्चर से, और इतना मार्क्स रिटर्न में आ गया कि इंटरव्यू में बहुत कम भी आया, तब भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। तो मैंने पूछा अपने रिसर्च स्कॉलर से, यार उसका कैसे हो गया? वो तो वो प्राणी है जो उपहास का मात्र होता है ना, आप एक 4 टांग वाला होता है जिसके बारे में कहते हैं, तुम तो एकदम बिल्कुल ये हो वो। तो हमने कहा कि वो तो बिल्कुल वैसा है, बस सर उसने क्या किया जानते हैं सर? पिछले 8 साल का सारा क्वेश्चन बैंक लेके बना गया। इसका मतलब है कि जो एग्जामिनेशन में सवाल पूछ रहे हैं वो वही पुराने सवाल वो रिपीट कर रहे हैं। क्वालिफाई करें, अब यूपीएससी क्वालिफाई करके दिखाइए। हर बार ऐसा ट्रेंड, मतलब कौन से इतनी तरह की गूगली उनके पास है, इतने तरह के बॉलर्स हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो एडम जैम्पा है या कोई दूसरा बॉलर है, फेस बॉलर। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। What are the job opportunities? These are some of the job opportunities that I'm mentioning. Corporate manager, data collection analyst, NSSO, CMI में आप काम कर सकते हैं, बैंक फाइनेंसिंग कंपनीज में काम कर सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट हो सकते हैं, प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं। Some of the possible jobs आप जानते हैं बेहतर। Next is going for higher education. I have 10-15 minutes. Higher education. After doing your graduation, you can go for masters. Not just masters in economics. You have a number of alternative.
Masters in Economics, Masters in Applied Economics, Masters in Business Economics, Quantitative Economics, Business Administration, Data Science, Financial Economics, Environmental Economics. ये सब के सब का बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? बीए में अगर इकोनॉमिक्स है मिलेगा, एमबीए तो बहुत ओपन है, बाकी सब में इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट जा सकते हैं। और सबके अलग अलग, यहाँ पर कुछ के मैंने लिख दिए हैं, बगल देखिए दिया हुआ क्या क्या जॉब आपको मिल सकता है, बहुत में ओपन है, मैंने छोड़ दिया है। कैसे चुनेंगे? दीज आर द क्राइटेरिया। हाउ टू चूज? चॉइस ऑफ कोर्स, ड्यूरेशन क्या होगा, इंस्टीट्यूशन को चुनना पड़ेगा, उसकी एक्रेडिटेशन, नैक रैंकिंग कितनी है, एनआईआरएफ रैंकिंग कितनी है, हाउ टू चूज द इंस्टीट्यूशन, एंड देन लोकेशन क्या है। बॉम्बे में है, कॉस्ट ऑफ लिविंग वेरी हाई, माय फादर कैन नॉट अफोर्ड, इट इज लोकेटेड इन लखनऊ, वी कैन अफोर्ड, चाची रहती हैं उन्हीं क्या रह लेंगे। ऑल दीज कंसिडरेशंस आर इम्पॉर्टेंट, एंड यू हैव अ नंबर ऑफ good institutions which are imparting higher education in economics. For example, Delhi School of Economics, Jawaharlal Nehru University, two centers concerned with economics. They have CSRD and CESP. Our university itself, IGIDR, Indira Gandhi Institute of Development Research, आप MA कर सकते हैं वहाँ से. Madras School of Economics, Jadavpur University, it is a state university but doing wonderful job, very high ranked. CDS, Center for Development Studies, Thiruvananthapuram, Gokhale Institute of Politics and Economics, Center for Studies in Social Sciences, Kolkata. Some of the better institutions which are imparting higher education in economics are these. There could be more. So once you want to go for higher education, talk to your teachers. They will let you know about it. Last, starting your own business. नौकरी देने का नहीं, नौकरी लेने का नहीं, नौकरी देने का। तो स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम इज प्रोवाइडिंग यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो आप उसके बारे में जाइए, चूँकि कुछ 10-12 मिनट हमें क्वेश्चन के लिए भी रखना है। सो यू कैन गो फॉर स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, लर्निंग प्रोग्राम, उसका गाइड बुक आप पढ़िए, यहाँ पे आप जाइए उनके वेबसाइट पे डाउनलोड कर लीजिए गाइड बुक और पढ़िए कि क्या है, कैसे करना होगा, क्या आवश्यकता है। यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, हाउ टू गो अबाउट इट। इट्स नॉट दैट जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन आप कल उठेंगे और ऐसे चुटकी बजाएंगे, परसों आपकी दुकान सामने होगी, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो उसके बारे में प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इनको पढ़िए, पार्टनर सर्विसेज क्या है, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स वो पब्लिश कर रहे हैं, विच आर द फील्ड इन विच देयर एग्जिस्ट अपॉर्चुनिटी, एंड यू हैव टू ऑल्सो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्या क्या ओला ने सोचो, ना गाड़ी उनकी, ना ड्राइवर उनका, और पैसा उनका है कि क्या कर रहा है, मेक माई ट्रिप क्या कर रहा है। ओला की गाड़ी है, ओला की कुछ जगह उन्होंने शुरू में लॉन्च किया था, फिर सब विड्रॉ कर दिया, गाड़ी किसी और की, पैसेंजर कोई और है, ड्राइवर कोई और है, और आप ओला को 600 रुपया आप बिल पे कर रहे हैं, पता चला कि 125 रुपया 150 रुपया उसमें ओला पे जा रहा है, करोड़ों रुपया आइडिया, उस आइडिया से वो पैसा बना रहे हैं। तो यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अदरवाइज नहीं कि हम भी खोल देंगे, इतना बढ़िया चलता है, महारानी रॉल, महाराजा है, महारानी कुछ है ना लंका पे, fine, I can open this same business which other people are doing. I'm not saying that that's a bad business. You can go for that. कि नहीं, जो हम नया कुछ नहीं सोच सकते हैं, बाकी जैसे कर रहे हैं, सर हैदराबाद गेट में ऐसा नहीं, वहाँ खोल देते हैं, बहुत चलेगा, कर सकते हैं। So you have to now think about it. स्टार्टअप इंडिया का मैंने यहाँ पर आपको साइट का दिया हुआ एड्रेस, आप उससे भी खोज सकते हैं, और वहाँ पे जाके आपको ये सारी चीज़ें सोचिए, feasibility of your idea, you have to prepare a business plan, you have to actually get the right business structure, you have to look for fund, venture capital और angel funding, ये आप इकोनॉमिक्स वाले शायद जानते होंगे, then कंपनी को रजिस्टर करना, ये सारी चीज़ें। Some other opportunities are freelancing, YouTuber, tutor, blogger, content writer, part-time job, social media, ये सब भी आप कर सकते हैं। You have the capability, थोड़ा स्किल डेवलप कर लेंगे तो आप कर सकते हैं। These are some alternative। यहाँ भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो मैंने सही थ्रो कर दी है, ये भी हो सकता है, और ये तो बहुत छोटी सी लिस्ट है, ऐसे और लंबी लिस्ट आप बना सकते हैं। So just you can start your own business. These are the 5 areas in which you can think। Last, my suggestion, first assess your career goals. Try to understand what you want to do in life, and always choose something. You want to go to a movie and you have a discussion of 2 hours with your friend कि वो जवान देखने के लिए जाएं या बुढ़ापा देखने के लिए जाएं,
अरे यार नहीं वो पुराने का जगह 1 घंटे तक चिक 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 चल रहा है और कैरियर में फॉर्म निकला इसमें भर रहा है, अरे मैं तो कर रहा हूँ जा रहे जाने के लिए तुम भर रहे हो हम भी भर। और ये सबके साथ ज्यादा किसके साथ होता है जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं क्योंकि वो देते हैं क्वालिफाई करके। मेरा एक स्टूडेंट था उसने दिया कोई क्लरिकल जॉब इन दिल्ली। he got registered under me for PhD and he appeared in the clerical job और क्वालिफाई कर गया। अब क्वालिफाई कर गया तो भारतीय माता पिता जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में रह रहे हैं मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय उनको आप कैसे ये कन्विंस करेंगे कि नहीं यहाँ जो PhD कर लेंगे तो एकदम बहुत भारी प्रोफेसर बन जाएंगे। अरे कोई गारंटी है 5 साल और पढ़ोगे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिल रहा है कर लो ज्वाइन। अब वो रोज रोते हैं और धीरे धीरे उनका रजिस्ट्रेशन का जो टर्म है कैंसिल हो गया क्योंकि छुट्टी 2 साल की मिलती है दैट इज एक्सपायर्ड। क्यों? क्योंकि उन्होंने कैरियर गोल कर मैंने उससे पूछा उस आके अभी 3 महीने पहले आया था कि सर मेरा तो कैंसिल हो जाएगा। यस आई आस्क्ड हिम वन सिंपल क्वेश्चन व्हाई डिड यू एक्चुअली अपीयर फॉर दैट एग्जामिनेशन डिड यू वांट टू बिकम अ क्लर्क देयर इन दिल्ली गवर्नमेंट। नहीं सर ऐसी बात नहीं। तो एग्जाम क्यों दिया? एग्जाम दिया तुमने कुछ सोच के दिया होगा ना। तुमने दिया इंडियन माइंडसेट है तुम जान रहे हर गार्जियन डरा हुआ कि बच्चे को कुछ हो जाए आपकी कैपेबिलिटी वो समझ नहीं रहा है वो कंपटीशन को देख रहे हैं। यू शुड नॉट हैव अपीयर्ड इन दैट एग्जामिनेशन। इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट chances of you getting selected is always going to be high. Don't appear in that examination. You choose your career goal and follow that career. Second, do informational interviews. Always speak to people who have exposure, who have knowledge. I told you in the beginning that I am not the right choice to give you a lecture on career counseling because I am a teacher. I am not an expert on career counseling. I have very little exposure on this. Fine. When he said, "Sir, you have to speak on career counseling," I collected some material, and since I am a teacher, I am presenting it in a systematic manner because I am trained for that. But I have no practical exposure. So talk to people who have practical exposure. Talk to your student advisor. Ask them to organize lecture of trained career counselors and speak to people like you. Speak to people who are in the corporate field. भैया आप जो काम कर रहे हैं बॉम्बे में इसमें किस प्रकार की नौकरी मिलती है क्या ट्रेनिंग होता है क्या इसका क्वालिफिकेशन है क्या सब बीटेक वाले को ही लेते हैं क्या BA इकोनॉमिक्स वाले को नहीं लेते हैं। Try to collect information. That is very important. Third, start working early, regularly and with time frame. And fourth is just don't एक कहावत है it is important to plan your work but it is more important to work your plan. Many of us plan our work. कल सुबह उठूंगा और 6 किलोमीटर दौड़ूंगा 3 महीने में देखेगा बॉडी ऐसे फिट हो जाएगी और जब सुबह हुआ ऐसे बजाय से बाहर निकाले देखे बड़ा आसान लगे बोले आज छोड़ देता हूँ मैं कल से करूंगा पक्का अब तो कुछ भी हो जाए कल से करूंगा and tomorrow never comes. So what that is last thing that I am saying follow a SMART goal. SMART means specific, measurable, achievable, relevant and timely. If you do that definitely you are going to be successful. So these are some of the suggestions that I am giving you. As I told you in the beginning also, told you repeatedly that I teach economics. My job is not career counseling. I teach economics, so I have not been able to do justice to the responsibility that has been offered to me. But whatever I knew, I tried to communicate with you. So do this, talk to people who are more skilled in this job, and it's a very good thing that you people have done. That will create some awareness. That's all. If you want to interact with me, if you have any question, still we have 10 minutes, so I can take questions. बताइए कोई प्रश्न हो आपका बताइए. Somebody from audience has a question. You can stand up and ask a question directly. सब संतुष्ट हैं? ये दो ही परिस्थिति में होता है. ये तो बच्चा में ऐसा बका हो कि कुछ पूछने के लिए बचे ही नहीं. Yes sir. या आप इतने मेरे ज्ञान से ओतप्रोत हैं जिसका मुझे कतई विश्वास नहीं है. अब क्या बचा? अब तो वाल्मीकि जी ने स्वयं ही रामायण कथा सुना दी. तो मुझे लगता है दोनों में से कोई बात सही नहीं है. आप नहीं पूछना चाहते हैं अच्छी बात है. We have some questions from Google Forms that we Okay. Okay. सर पेन ड्राइव मैं तो
मैं आपको इसका पेपर पे वर्ड फाइल आपको मेल कर दूँ. Okay, so the PDF that was being shown here will be transferred to you guys by the WhatsApp group of the society. Please kindly do refer those groups. अभी थोड़ी देर में हम लोग एड्रेस करेंगे, उस QR को दे देंगे. अगर आपने नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF की जो एग्जॉस्टिव PDF है वो आप ले सकते हैं. Okay sir, so we have a question from Google Forms that is about the what specific skills or specializations are currently in high demand in the current scenarios in the field of economics. As I said in the beginning also, and I have shown it in the slide also, I have shown some skill set which are required, which are expected from an economics graduate. Now, there are two kinds of jobs that you are actually looking for. One, which typically tests and which uses the skill that you have learned here as an economics graduate. And second, any kind of job which requires some intelligence and which doesn't require the knowledge of economics. These two kinds of jobs are there. I keep asking, my son did his BTech from a good institution and now he's working in a bank. यार पैसा बर्बाद किया पिताजी का, बीए करके जाते कुछ मुझे भी पैसे बचते तो क्यों बीटेक करके तुम अरे आप नहीं समझते हैं, लेता ही नहीं है वो टेक्निकल जो होता है ना क्वांटिटेटिव वगैरह वो मैनेजमेंट में सिलेक्शन ही नहीं होता है. तो two kinds of things could be there. One, you are going to get a job where the knowledge of the particular discipline in which you are trained, economics, is going to be tested. For example, computational skill that is required from any graduate. Now, economics graduate, in addition to subject area skill, you also need to have numerical skill. Because if you are a student of economics, they will expect you to do some forecasting, some computation based using different kinds of statistical software. So they will ask you, can you handle Python? Can you handle R? Are you comfortable with Excel? So these are some skills that you are required. In addition to the basic skills like communication, basic skill like administrative skill, problem solving skill, analytical skill. These are analytical skill, problem solving skill, organizational skill, communication skill. These are compulsory for all jobs. But for economics graduate, I would say subject area upgradation is one. The numerical proficiency is second, and handling different kinds of computer software, especially the latest one like Python or R. These are considered important. Okay, sir. So we have another question. That is how to build a good profile for top business schools and multinational companies. So how can we build that profile so that selection might be smoother? See, if you talk about the top business school, apart from building your profile, that is secondary, you need to develop the basics, proficiency in the test that CAT conducts. Because you cannot join any good professional skill without qualifying CAT. And just recall that if you are having 98th percentile, you are not going to get into most IIMs. And all good management institute, they will not take you if you are less than 95th percentile. So knowledge of mathematics, that quantitative Q, that the same, knowledge of English, just look at their question paper. CAT का question paper लिखा लिया उसके वो एक word देगा और 4 synonyms दे रहा है, कह रहा है आपको कि which is the closest one. Honestly, ना मुझे word पता है ना चारों synonyms पता है. Just imagine the kind of because this is not the process of selection. This is the process of rejection. Because all those who have some minimum level of knowledge, if they select them, then they have 100 seats, there are 1,000 people who are qualified. So they keep increasing the level. So you have to, if you want to go to business school, develop your language ability, vocabulary, grammar, that is for English. Then for quantitative, you have to go for, we have so many books now available. You have to go, R.S. Agrawal की किताबें बड़ी धड़ल्ले से लोग मैनेजमेंट वाले पढ़ते हैं, तो आप क्वांटिटेटिव एबिलिटी आपको डेवलप करनी होगी. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड एनालिटिकल स्किल की जीमैट की सीरीज आती है, आप उसको पढ़िए, उससे बहुत आपका डेवलप होगा. This is for this. As far as corporate sector is concerned, now corporate job, there are two kinds of job. One, the higher level job where they are looking for an MBA degree. For that you have to go through CAT channel, so automatically you will be trained. And the relatively middle level job or lower level job, they offer to graduates also. And there, your communication skill, your analytical skill, your computational skill, your
how comfortable you are with handling with different softwares. These skills are more important. So it depends on the kind of job. So we have last question from the Google Forms, that is, being a Bachelor of Economics student, what should I do to become a successful economist if I want to become an economist in the future? Well, the first thing is that you have to enjoy studying economics. As I said earlier also, that you have to make your interest, your passion, your profession. So you have to enjoy studying economics. If you don't enjoy studying economics, you cannot be a good economist. Because when you start enjoying it, you start exploring the unknown territories. Then you want to know every new thing which is coming up. That is the first thing. Secondly, obviously, contact some teachers who will tell you about good books. Because most of us, what we do when we go to our classes, good majority of our students are coming from Hindi school, and they will always insist that suggest some good book in Hindi. Unfortunately, with all due respect to our mother tongue, unfortunately, we do not have good books in Hindi. So teachers, when they suggest books in the class, they will suggest some ordinary books. So go and meet them personally and tell them, sir, I want थोड़ा ज़्यादा सीखना चाहता हूँ, क्या पढ़ूँगा? And then not only the books are important, the sequence in which these books are to be read, which is very important. If I ask you go and read microeconomics book by Green, you won't understand a single word. But if I say, fine, not very comfortable, start with Ahuja, study it for a month or two, shift to Curtianus, study it for some time. When you feel comfortable Curtianus, go to Golden Ledger and Browning, and if you can see that you can handle it well, then go for Green. So it all depends. It all depends on the quality. It all depends on how you want to go about it. Interest is must. आपको enjoy करना पड़ेगा. आपको विषय को enjoy करना पड़ेगा. कोई भी प्रोफेशन बेटा, अगर आप enjoy नहीं करते, अगर मैं क्लास जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए और मैं excited नहीं हूँ, तो मैं कभी भी deliver नहीं कर पाऊँगा. कहाँ फंस गया यार? जल्दी से खत्म करो. रास्ते में आप मिल जाएंगे. मेरे 2 मित्र 4 थे, मैं जहाँ पहले था. और वो क्लास के लिए जा रहा मैं आ रहा हूँ, रोज बैठते हैं एक ही डिपार्टमेंट में. और सर क्या हाल चाल है? I mean, he will spend 10 minutes talking to me, और जबकि रोज मैं क्लास लेने के आएंगे तब भी मैं साथ ही बैठूंगा. You are not enjoying it. You can never deliver. So you have to enjoy it first. Get into good company of teachers, good company of books. There are so many material now available. एकलव्य आज के ज़माने में बिल्कुल संभव है. मैं नहीं जानता कि उस ज़माने में भी संभव था या नहीं था. अगर एकलव्य का कैरेक्टर है तो रहा ही होगा. आज इतना कुछ YouTube पे भरा पड़ा है, ढेर सारी चीज़ें जो हमने कभी नहीं मैंने पढ़ी है, मुझे पढ़ाना होता है, तो मैं बैठ के सारे वीडियो डाउनलोड करता हूँ 10-20, फिर एक एक करके उसको छांटता जाता हूँ, क्योंकि वहाँ कचरा बहुत है. अगर मैं 20 वीडियो डाउनलोड करूँगा तो 14 कचरा निकलेगा. उस कचरे को 2-4 मिनट ब्राउज करके हटाया, फिर 6 को पढ़ो. So you can become an eklavya, even if you do not get a Dronacharya. Even becoming an eklavya is also possible. Anything else? So thank you all for patient hearing. As I keep telling, मैं expert नहीं था, लेकिन मैंने कुछ बताने की कोशिश की. धन्यवाद.